Hello everyone, this is Shikha Banaf and my friend Kunika Dongre from Master of Science Biochemistry. We want to introduce a basil perfume in the society in a pure form. Let's proceed with the introduction. Osmium teniflorum is a scientific name of tulsi. It provides aroma and it belongs to the family Lamiaceae. It mostly widespread in the southeastern Asian tropical area. Tulsi consists of essential oil like eugenol, beta element, beta carotene and germastrin with a balance being and mostly consist of terpenes. सो आइडियाज़ एंड डिस्कवरीज रिलेटेड बात करेंगे तो साइंटिस्ट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ कोएक्स टू इनिबिटर लाइक मेनी मॉडर्न पेन किलर्स ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूगेनॉल. Tulsi can work on a Ayurvedic practitioner claim. It strengthen the customary uses and prepare a Tulsi in a variable treatment like mental pressure and metabolic condition, even a cholesterol and a blood level also. How the perfume benefits for the human being. Help combat stress. If we perform a show a metabolic stress to human on a blood glucose level etc, definitely it works on that. It also show psychological stress on human through a positive stress on memory. Definitely boost immune system. Apply basil perfume on a daily, keeps the mosquitoes and other insects away. Just consume 2 to 3 drops of perfume daily to keep your skin moisturized and free from infection. Definitely lower cholesterol की बात करें तो people to if we take 2 to 4 drops of basil perfume for daily for 1 month, it reduces 2% cholesterol. Definitely scientists still working on this for the health benefits, but in short we can say healthy for all age people. In short, clinical trials also proven that it is very safe for human beings. लेट्स प्रोसीड विद अ स्वाट एनालिसिस. स्ट्रेंथ की बात करें तो डेफिनेटली वो मेमोरी को इम्प्रूव करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे वर्क करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, माइक्रोबियल, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज पे भी वर्क करता है. वीकनेसेस की बात करें तो तुलसी हैज़ अ यूगेनॉल विच इज़ अ एसेंशियल ऑयल. इफ इट टेक इन अ मोर परसेंटेज इट बिकम अ टॉक्सिन एंड इट डैमेज द नोशिया, लीवर, रैपिड हार्ट बीट एक्सेट्रा. अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डेफिनेटली basil is a medicinal properties. It works on stomach and help in a respiratory diseases. kidney stone को strength लगता है. even it balance the insulin level. threat की बात करें तो अगर those are taking allopathic medicine, for them people it is very good to take a basil perfume and spray on the body, but those are taking anti-clotting medication, for them people it is very harmful. Let's proceed with the financial fund. Tulsi is a very demanding plant in the health for the health benefits. Definitely farmer benefit a greatly production of medicinal plant known as a pharmacological plants. It's a growing high earning in a short amount of at minimal cost. Simply farmer invest 15,000 to 20,000 and earn 3 to 4 lakhs in a 3 months. Definitely we can say it's a profitable business for farmers, but there are some financial goals are also like we have to target that product and how to expense and we have to think about the budget also. According to the market condition we have to overcome the cost of the product. Even we have to consider the profit margin, if we increase the cost or not. Many considers like connecting with customers, lifetime opportunities है कि नहीं उसके लिए, that product will benefit for the society. how we design our product कि उसके प्रोडक्ट का साइज़ कितना चाहिए, वो कितने रेंज में होना चाहिए, उसका एमआरपी कितना होना चाहिए, हर चीज़ पे हमें वर्क करना पड़ता है. सो उसके बाद ही प्रोडक्ट लॉन्च होगा. सो प्रोसीड टू द कंपैरिजन ऑफ ऑयल एंड अल्कोहल बेस्ड की बात करें तो सॉल्वेंट्स अगर रिलेटेड बात करें तो कोकोनट ऑयल बेस्ड होते हैं, अल्कोहल बेस्ड में वाटर अल्कोहल होगा. सेंट की बात करें तो लास्ट लॉन्गर होंगे, हाँ इवेपोरेट्स होंगे. कंटेनर की बात करें तो स्मॉल बॉटल्स, बिग बॉटल्स. एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करें दोनों में स्प्रे वाले यूज होते हैं. इफेक्ट ऑन स्किन की बात करें तो मॉइस्चराइज स्किन होगा ऑयल बेस्ड में, हाइड्रो अल्कोहलिक में ड्राई स्किन होगा. कंक्लूजन से रिलेटेड बात करेंगे तो तुलसी has widely used for curing various alignment to a great therapeutic potential. A number of pharmacological effects like hypoglycemic, immunomodulatory, anti-stress, anti-inflammatory, anti-ulcerogenic and anti-hypertensive, depression, radioprotective, anti-tumor and antimicrobial effects of osmium santum भी देखने को मिलेंगे. But
we should know how the competitive advantages are there. We should organize with compete business and product market within its domain, differentiate the current product with already products which are launched like related to perfumes, हमें उनसे बैलेंस, बट इतना तो मेक श्योर है कि ये प्योरिटी प्रोवाइड करेगा टू द एनवायरमेंट एंड डेफिनेटली प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन टू द सोसाइटी. एंड थैंक यू सो मच फॉर